Welcome to our Engineers Academy powered by NIMBUS Learning. अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आउट हुआ है और उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हमारी स्टूडेंट है नयन सक्सेना, जिनका सिलेक्शन हुआ है और इनके साथ आज की हमारी टॉपर स्टॉक रहेगी। अभी तक हमने देखा काफी स्टूडेंट्स के साथ काफी सारी टॉपर स्टॉक रही है, जिनकी जुबानी हम लोगों ने उनके सफर के बारे में सुना है। तो आज हम नयन सक्सेना से बात करेंगे उनकी जुबानी की उनका सफर कैसा रहा। इससे पहले मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से करी है इन 2019 लखनऊ से, और इन्होंने हमारे यहाँ से ऑनलाइन पेज लिया था, ऑनलाइन कोर्स लिया था, उसी के थ्रू इन्होंने अपनी प्रोफेशन की। साथ में इन्होंने टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करी और उनका उसी के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। राइट, तो नयन सक्सेना से हम बात करेंगे, उनकी जुबानी सुनेंगे कि उन्होंने पूरा सफर कैसे तय किया है और उन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी है। तो नयन बताइए, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन का कैसा रहा सफर पूरा? It was a good experience actually. Got to learn a lot of new things, and Engineers Academy has been quite instrumental in my first success in any of the competitive examinations. As far as the classes were concerned, the classes for aptitude and reasoning, an area which was very weak for me, that was really helpful in cracking the examination, and I could easily cross the threshold of those 40 marks in both the papers easily. Despite being a working professional, I could only take out 1.5 or even 1 month for this examination solely. And since I was in a 9 hours job, it was quite difficult to take out time for self studies. So the classes were quite helpful. Since once when you are working, gets very difficult for self study and all, especially when things are new. Rajasthan history, geography, everything was very new to me. I never gave any examination which was concerned with Rajasthan. This was the first such examination, and my experience was really good. So I would like to suggest that any examination which is related to Rajasthan government, NIMBUS Academy can be instrumental in clearing it. They gave a quite in-depth analysis of each and every topic, like history, geography. So I could really connect with the dots, and even while I entered in the examination hall, the questions which came were a little logical in nature, so it required elimination and guesswork. So it was possible only through the in-depth analysis which was provided in the classes. I also did the test series from NIMBUS Learning, even though I could not do all the tests due to the limited time span I had. But the test which I gave me a real-time analysis of how my preparation was, and they kept me on track that okay, these are the areas from which the questions can be asked, and this is how the paper is going to be. So test series is very helpful in guiding you on the path. You don't get deviated while you're preparing. So it was never an issue while I was doing the classes in test series that बहुत ज़्यादा bulk में कुछ पढ़ना पड़ जाए या फिर I go out of the way while preparing for an exam. I also practiced for paper 1. I also did the MCQ booklet from the NIMBUS Learning. So it was quite bulky, but it was really helpful. It was full of knowledge, and the questions were really हमारी बुक में 3000 प्लस क्वेश्चंस थे, वो बुक आपने वो भी अटेम्प्ट करी है, उस पर भी आपने प्रैक्टिस करी है, राइट? Yeah, it was helpful before giving the tests because initially तो कोई idea नहीं था राजस्थान से related questions के बारे में कि किस तरीके के questions put up होंगे. तो before jumping to the test series, I practiced MCQs. ओके, और जैसा कि नयन बता रही कि उन्होंने टेस्ट सीरीज भी ली और टेस्ट सीरीज के थ्रू उनका काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि पहला अटेम्प्ट किया है, उनके बाद जो डाउट्स है, उनको जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की, देन सेकंड अटेम्प्ट की, देन थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से उनको काफी हेल्पफुल मिला है, हुआ है। और ऑनलाइन कोर्स में भी इनका टेक एंड नॉन टेक के बारे में बता रहे हैं कि काफी इनको
हेल्प मिली है। तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी कि ये एज अ नेटवर्क इंजीनियर ये वर्क कर रही है और उन्हीं के साथ साथ इन्होंने प्रिपरेशन भी करी है। तो आप मुझे बताएंगे कि जॉब के साथ साथ या बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो स्टडी के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, सेल्फ मोटिवेट कैसे रखना चाहिए, तो इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए आप। Okay. Uh, while you are in preparation, it will not be possible for you to make notes. I tried making notes. I made around this big bunch of notes on A4 sheet, but by the end, I could not revise them, and I never even saw them again. So it's not mandatory for you to go for notes making as such. Just believe in yourself that whatever you're doing, you are going to get through it easily. There is no rule that if you're not making notes or if you're not attempting a test series, you're not going to clear an examination. But it depends on your approach, how much you're confident that अगर ये चीज इस तरीके से करते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाता है. You have to focus on your strong points. For me, doing an online coaching in this limited time span was very essential because self study के लिए इतना टाइम भी नहीं बचा था. और definitely, if you go for an online course or coaching, it will help you. Because this was my first examination where I could clear cut off for both the examinations very easily. So classes are definitely helpful because you will always require a guidance from teachers. And as far as working professional is concerned, you will not get enough time. Like if it's a private job, 9 hours job, then you can hardly get 4 or 5 hours on working days, and the entire day you can take for on off days. On off days, it's not like the entire day you are going to study, but as much as you can push it, you can do. And you have to manage your leaves very well. Like I used to take you have to keep your leaves away. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम से पहले you don't have leaves. You have to take leaves for the examination as well. You need to take, suppose you have 2 week offs and you have studied very well in those week offs, and you think in the next day also you can keep that much potential to study, तो 2 week offs खत्म होने के बाद जो तीसरा दिन उस दिन आप sick leave ले सकते हो for studies. So you have to manage your leaves very well. ओके, तो नयन ने बताया कि स्टडी हो या फिर कोई आप जॉब करें, उसके साथ किसी एग्जाम को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है यदि मोटिवेशन है हमारा और हमारे अंदर आपका पेशेंस है। तो यहाँ पे एक पी फैक्टर काम करा, जैसे इन्होंने बताया कि यदि पी फॉर प्रिपरेशन करें पी फॉर पेशेंस के साथ और पी फॉर प्रैक्टिस के साथ, तो जरूर आपको पी फॉर पास तो आप एग्जाम में डेफिनेटली होंगे। तो ये इन्होंने पी का जो गुण मंत्र बताया है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, पेशेंस भी रखना है और प्रिपरेशन भी करनी है, तो साथ ही साथ आपको सक्सेस यानी आप एग्जाम में डेफिनेटली 100% आप पास होंगे। तो एग्जाम में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये तो हमें नयन ने बताया है। और इनके बारे में एक बात और बताना चाहूंगी कि इन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे पहले नहीं दिया। ये जो एग्जाम था इन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मिलाकर भी फर्स्ट टाइम इन्होंने अटेम्प्ट किया, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में इन्होंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया है। इट मीन्स कि जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो स्टडी की कंसिस्टेंसी होती है, ये इन्होंने बहुत अच्छे से बना के चली है। तो आप थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे कि जो हमारी स्टडी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो कैसे उसको बना के चले, ताकि स्टूडेंट्स को एग्जाम के अंदर कोई घबराहट ना हो, कोई मतलब की जल्दबाजी ना हो, बहुत आराम से वो प्रिपरेशन कर पाए। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। Okay. While you're preparing, whenever you're giving mock tests, you should be solely focused on those mock tests. वो 2 hours should be solely dedicated to them. ये नहीं होना चाहिए कि 1 hour you're giving mock test and break ले लिया, फिर again you're resuming with the mock test. This will not give you a real time scenario of the examination hall. If you're if you're preparing from an offline institute, then you can go to that institute and write down the mock tests. Then you will get a feel of the real exam. But if you are online, you need to show discipline and dedication. Even while watching videos, online lectures, it should not happen that
एक क्लास कर लिया बीच में गैप ले लेकर के. If you're doing a class, you should do it with full sincerity in one go and not by taking pause in between. ओके, तो मुझे आप ये बताइए कि यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और ड्यूरिंग द एग्जाम ऐसा कुछ घबराहट होती है कि मुझे एग्जाम में कैसे कर पाऊंगी, कैसे इसको मैं सॉल्व कर पाऊंगी, जब कभी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो उन प्रॉब्लम्स को एग्जाम से पहले ही कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप. Uh, Exam stress is very common. The more you practice, the less you will be afraid of the exam. So the main focus should be on practice. Even if you're not reading a lot of books, your focus should be on practice. That will help overcome the stress. Also, it will improve your accuracy in the long run. And आई हैव सीन पीपल जो बार बार कट ऑफ चेक करते हैं या फिर कितने लोगों ने अप्लाई किया है एग्जाम में, ये चेक करते रहते हैं. बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इट विल ओनली क्रिएट मोर एंड मोर स्ट्रेस. द मोर यू आर अनअवेयर अबाउट एन एग्जामिनेशन कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है या कितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, द मोर यू विल बी कंफर्टेबल दैट ओके this exam I'll be able to clear easily. But if you keep checking these statistics, it will be difficult to clear the examination and more stress you are going to gather. ओके, आपको कभी ऐसा लगा जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी कि ये एग्जाम से क्लियर नहीं हो पाएगा, यदि मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप का कभी कोई थॉट आया आपके माइंड में? Yeah, this fear comes a lot of times in mind, especially when people around you that know that you are into some kind of preparation. While I was preparing, I was also preparing for civil services examination. This year, I dedicated myself to the preparation only, whether it was basic computer instructor or civil services examination. Alongside, I as a working professional, we especially in private sector, there is always a need to upgrade your skills over time. So as I just have completed 9 months of my working career, so I had to keep some amount of dedication towards them also, because of I since I was being paid, I had to show some sincerity towards my work also. So can you please repeat the question? नो नो दैट मैं समझ गया कि हमारे सभी यहाँ पर जो व्यूअर्स समझ गए कि कर्म किया जाए पर फल की आशा मत कर. तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए प्रिपरेशन हमें बस दिलों जान से करनी है, पूरी मेहनत बहुत अच्छे से करनी है. हमें ये नहीं देखना है कि हमें कितना हमें आउटपुट मिलेगा, बस कर्म किए जाए पर फल की आशा मत कर. तो उसी मोटो को लेके हमें हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. और उसी मोटो के साथ नयन ने भी पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन करी और सीए के एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया है. तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो ऑनलाइन कोर्स जो निम्बस लर्निंग से उन्हें मिला कितना हेल्पफुल रहा, टेस्ट सीरीज उनको कितनी हेल्पफुल रही. ठीक है, तो ये सारा मोटिवेशन का देखकर हमें काफी अच्छा लगा कि जो कोई भी कैंडिडेट हो तो उसे सेल्फ मोटिवेटेड होना काफी जरूरी है. तो मैं नयन से पूछना चाहूंगी कि नयन आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं और जो हमारे ये टीम है उनको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? Yes, have faith in God. The mantra for success is simple. You need to get limited to minimum amount of content. One book per subject is sufficient. You need to revise them multiple times, and after that you need to practice a lot. There is no time to start practicing. You can start practice anytime. Also, for Nimbus Learning, I have one suggestion that right now a lot of competitive examinations are coming for PSU jobs like HPCL and BHEL, which are without GATE. So it is a good opportunity for the candidates who are going to apply. So स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस और तो कोर्सेज आ ही रहे हैं, बट कंप्यूटर साइंस के लिए अगर कोर्सेज लॉन्च होते हैं तो इट विल बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज this one course was really helpful for me to understand how a competitive exam has to be dealt with.
So PSU एग्जाम को भी क्लियर करना इतना डिफिकल्ट, no competitive exam is that difficult if you get the right guidance. So since Nimbus platform is really good, teachers are very dedicated here when it comes to learning. They provide in-depth analysis of every topic. So I suggest that more courses should be launched. ओके, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि राजस्थान के अंदर IAA यानी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट एंड प्रोग्रामर की नेक्स्ट टेक्निकल वैकेंसी आने वाली है। यदि आप लोग सभी इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो निम्बस लर्निंग जो कि ऑनलाइन एंड इंजीनियर्स अकेडमी जो कि ऑफलाइन कोर्सेस आपके लिए लेके आने वाले हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप अपनी और भी जो भी क्वेरीज है उन क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसा नयन ने बताया कि निम्बस लर्निंग यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी आप कोर्सेस आने वाले हैं, यदि वो आप परचेज करें तो वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो नयन, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नयन। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत आभार एंड धन्यवाद जिन्होंने हमें इतने आराम से इतने पेशेंस के साथ सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.